Assalamu alaikum dear students. In this video we are going to have a look at the use of preposition. These prepositions are those prepositions that have been repeated in Faisalabad board in past 5 years, I guess. Okay, so let me tell you this thing once again कि ये वो prepositions हैं जो कि ओवरऑल पूरे जो आपके बोर्ड्स हैं उनमें या फिर बीए लेवल पे भी रिपीट होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको लास्ट वीडियो में कि सेंटेंस का थोड़ा सा हुलिया चेंज हो जाता है, लेकिन मेन आइडिया जो है वो यही रहता है, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना बार बार ये जुमले आपकी नज़र से गुजरेंगे तो उतना आपका फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। तो सेंटेंस नंबर 1 है आई वेंट डैश द रोड टू हेल्प एन ओल्ड लेडी, ठीक है। आपने साथ साथ अपना गेस लगाते जाना है, मैं अपना आंसर लिखता चला जाऊंगा तो आप उसको मैच करते जाएं, ठीक है। सो इट इज ही वेंट अक्रॉस, एवरीवन मस्ट बी अकाउंटेड डैश हिज मिसडीड्स, अकाउंटेड फॉर, नवीद इज एडिक्टेड। अब ये थर्ड या फोर्थ टाइम ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है, एडिक्टेड टू। यू शुड अबाइड, अबाइड के साथ हमेशा बाय लगता है, ठीक है। यू शुड अबाइड बाय द रूल्स। दिस इज अ वेरी गुड हाउस टू लिव इन, रहने के लिए, ठीक है। ही इज सर्टन ऑफ हिज सक्सेस, ही रिमेन्ड डैश, he remained deaf dash advice, he remained deaf to advice, he is jealous dash my parents। तो यहाँ पे फॉर लगेगा, ठीक है। ही इज जेलस फॉर, लेकिन जेलस के साथ मल्टीपल prepositions लगती हैं, ये अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस पे डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। आई कैनॉट पार्ट विद, ठीक है। पार्ट विद भी जो है ये दूसरी दफा आ रहा है मेरे ख्याल से। माई फ्रेंड इज वेक्स्ड एट मी, विद मी, फॉर मी, अबाउट मी, तो इट इज एट मी। सेंटेंस नंबर 11 है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, people are deprived of their rights, you should give up smoking, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना। ये idioms में भी यूज हो सकता है सेंटेंस। the children were laughing at the clown, again ये idioms में भी आ सकता है। you should not boast dash your wealth, ठीक है। you should not boast of your wealth। we should stand dash our friends, stand by our friends, idiom है stand by साथ देना। he is yelling dash his servant, to yell at someone, ठीक है। we should abide, again अब ये देखें ना आपकी ये रिपीट हो रहा है थर्ड टाइम, ठीक है। we should abide by द लॉ ऑफ आवर कंट्री। अब ये अबाइड बाय जो होता है ना, कानून की पासदारी की सेंस में होता है। अबाइड बाय रूल्स हो सकता है, अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स हो सकता है, अबाइड बाय द लॉ हो सकता है, अबाइड बाय द लॉज ऑफ आवर कंट्री हो सकता है। कि हुलिया इसका चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अबाइड जब आएगा तो अबाइड के साथ आपने हमेशा बाय ही लगाना है। सेंटेंस नंबर 19 है असलम ऑलवेज बोस्ट्स अगेन ऑफ हिज वेल्थ, ये भी रिपीट हो रहा है। आई एम नॉट इंटाइटल्ड टू वोट होता है, डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स। जेलस का मैंने आपको बताया कि इसके साथ मल्टीपल prepositions जो हैं वो यूज होती हैं, कीपिंग इन व्यू दी सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ठीक है। ही बैक्ड डैश हिज डैश ऑफ हिज प्रॉमिस, बैक आउट होता है वादे से मुकर जाना, ठीक है। तो ये सेंटेंस अगर आप याद कर लें, ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, सो इफ इट appears in the idiom section, so you could write this sentence as well। he is fond of sweets, he caught me dash the neck, he caught me by the neck। Sentence number 26 है he is anxious about the exam results, they have inquired dash your health, they have inquired after your health, you may count dash my help in this matter, you may count on, ठीक है।
They are in different dash wordly gains. They are in different two wordly gains. He broke dash with his friends for nothing. He broke away. सेंटेंस नंबर 31 है. His sickness confined him to bed. Everybody craves dash wealth, craves for wealth. He is supposed to be proficient in English. You can hardly dispense with होता है कि किसी चीज को साइड पे रखना या फिर किसी चीज को इग्नोर करना, कि ये ऐसी किताब है कि जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. ही वॉज डिप्राइव्ड डैश हिज रेपुटेशन. ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज रेपुटेशन. नंबर 36 है. ही इज void of wisdom. The brave do not yield to enemy. Slim introduced Ali to me. He is sure of या फिर हिना is sure of her success. He has no taste for music. Okay, so these are the prepositions that were repeated in Faisalabad board for 4 years. Okay, so I am really hopeful that these prepositions, they will be very helpful for you in securing good marks in the final exams. Thank you so much for listening.